was absent in the second hearing on 11th February 2025. And the same actions continues that to without intimating the reason for his absence. So is that PIO absent without information or without citing the reason for his absence, despite the repeated summons served unto him to be present in the hearing of the appeal referred against him by the appellant. In the absence of both the parties, the commission hereby observes: number one, appellant SHRI Vijay has been repeatedly absent for 4 hearings, including today, despite notice for hearing served unto him equally from this commission. Again, in the 4 repeated actions of the hearing, appellant Vijay has never intimated the reasons for his absence to the commission. Third, the repeated absence of the appellant without doubt display the non-seriousness of the appellant in pursuing his appeal. The next, for such non-serious appellants filing appeal before the commission unnecessarily wastes wastes the precious time of the IO
as well as the head about observation. The commission whereby besides number one, non seriousness and petulant while swing is appeal and absenting continuously in the hearing. But understand to believe that the appellant is not interested to pursue this appeal. Else, ELSE, else the appellant should have at least submitted letter of absence in at least one of the hearing for this absence, and which was not by the appellant. Pursuant upon pursuant, PURSUANT, pursuant upon the critical observations, critical observation as stated above, the commission hereby dismiss this appeal ex parte. Therefore, last line. Bisa Tapam versus EE Hydropower Tower. Center. Online tu ni nak bisa Tapam. Tapi dekin sincerely attend kata saya. Well, school both parties. I joined करके that's it लगा. But my name was to be here. It's very sure. Yeah. Returning on worry. Nah, ये औसी लोग का ये एक tetapan apa ya
John Tara Bake versus Joint Director Science and Technology. E sector. जॉन बाके आप है हाँ तो बताइए आपका नाम क्या नोट करो रिपोर्ट करो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आना ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला है कुछ मिला है लेकिन मैक्सिमम कुछ मिला है मीन्स आप पर्टिकुलर होना पड़ेगा आपको कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं मिला है आपका एनेक्सर वन में हाँ मेरे पास फीस है बताइए सैमसंग पोर्ट डिड नॉट प्रोवाइड नहीं 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 आप आपका एनेक्सर वन में आइए आपका एनेक्सर वन आपका खुद का फॉर्म एक एनेक्सर वन वही तो सर वही तो बोल रहा हूँ नंबर वन मिल गया है नंबर वन जो नहीं मिला टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट ऑफ ग्रुप ए बी सी डी नहीं मिला नहीं मिला है नंबर वन को number two, note sheet on which file was moved and got approved through AR and Finance departments for appointment for the post of district coordinator, assistant coordinator, data entry operator, assistant scientific officer, and scientific officer, education officer, assistant education officer, account officer, assistant account officer, and assistant. ये मिला है नहीं मिला ऑनरेबल सर नहीं नोट शीट नहीं मिला हो जाएगा recruitment rule of all group A, B, C, D posts. Activities carried out by district coordinator, assistant coordinator, data and ये सब मिला नहीं मिला बस उनसे सुनते रहते हैं ना आपको सुनेंगे copy of advertisement and total cost for which advertisement was made for post of district coordinator इसको मिला नहीं मिला List of information of all the above mentioned appointed posts. There may be furnished in the following format with supporting documents. Name, designation, date of appointment, promotion, pay matrix. Six का number नहीं मिला ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट ग्रेजुएट पीजी डिग्री ये तो आपको नहीं मिलेगा हाँ, नहीं मिलेगा क्या आपको एग्जाम दिया था ये लोग का साथ में ना नहीं दिया वो नहीं मिलेगा father and mother name and both present and permanent address. Details of advertisement for post of director, joint director and deputy director. कभी नहीं मिला ना Furnish copy of initial appointment and promotion order is regularized through DPC, then provide copy of DPC and plotted note sheet. Salary head of central grant and state grant all projects. Note sheet on which file was moved and formal approval accorded for appointment for the post of district coordinator, assistant coordinator, maybe like Provide details of posts recruited through SST, APSST with a covering letter to
DPIF, AIPF, नारलगन, सब नहीं मिला. A copy of bylaws of Arunachal Pradesh State Council for Science and Technology. सर वो मिला. ये मिला ना. Minutes of AGM meeting and executive committee meeting from 2006 to till date. सर वो आधा मिला. In case of direct appointment, deputation and promotion, furnished file not in cabinet approval not with all relevant documents for post of director, joint director, deputy director, assistant director. ये सब मिला है. जी नहीं. Appointment and promotion order. Copy of appointment and promotion order of director, joint director, deputy director, assistant director. ये सब मिला है. नहीं. Details of present director on deputation from SCIT and UGOV not sheet and appointment order and promotion order. नहीं मिला. Education qualification certificate mark sheet from plus 1 to under postgraduate ये तो नहीं मिलेगा. मांगने से भी नहीं मिलेगा. Furnish payroll list of all employees. Group ABCD of APSC, SLP consisting SN and Science Center. ये क्या मांग रहा है? पेरोल लिस्ट में ना. ये पेरोल जो पेरोल होता है ना, सैलरी जो पेमेंट होता है, उसका जो लिस्ट होता है. क्योंकि ऐसे होता है ना, मतलब पोस्ट एम्प्लॉय लोग भी होता है, तो इसमें हम पेरोल में पता चलेगा whether there is post employee or not. समझ गए? अमाउंट तो नहीं मांग रहा है तो ना, लिस्ट मांग रहा है ना. पेरोल लिस्ट अमाउंट मांगने से तो आपको नहीं देने देंगे. नहीं. असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टर अरुणाचल स्टेट काउंसिल की चेयरमैन ये मिला है. सर ये नहीं मिला है. सीनियरिटी लिस्ट ऑफ ऑल ग्रुप. सर ये भी नहीं मिला. ऑनरेबल सर ये नहीं. तो आपको सिर्फ दो इंफॉर्मेशन ही तो मिला है. हाँ वही सर. जिसमें से आपको और दो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. सर ये लिस्ट जो नहीं मिला है ये हम लिस्ट है. अभी हम नोट किया. तो इसमें पीआईओ आपका क्या रीजन है कि इनको अभी तक इंफॉर्मेशन को आप नहीं दे पाया? Total number of sanction posts group ABCD for inclusive. This is for us. नहीं सर ये इनको देने के लिए. ओके. हाँ. नहीं सर अगर उसमें से कुछ छूटा है ये है रिक्वायरमेंट तो हम लोग दे सकते हैं. मतलब अभी दे रहे हैं. नहीं पहले से दिया हुआ है. 2024 को दिया है क्या? इसके बाद भी हाँ 9 जुलाई 2024 को आप मिला है ना. हमको तो रिसीव नहीं किया. तो हम ये आपका रिसिप्ट है, आपका साइन है. देखिए इसमें सिंगल है. 2-3 एप्लीकेशन होगा तो हम बता देगा. 2-3 एप्लीकेशन तो हम ये भी नहीं करता है, डिसमिस करेगा. आपका रिसिप्ट है, वो आपका सिग्नेचर है. इसमें आप ग्रुप को एनक्लोज किया हुआ है. इवन एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी वो दिया है, जबकि देना नहीं था. आप इवन माँ पिताजी का नाम तो वो तो पर्सनल है, वो तो नहीं देगा. ठीक है. ये तो आप क्लास 10-12 सर्टिफिकेट को भी आपको दिया हुआ है. नहीं या एनक्लोज करके देता हुआ है. नहीं वो देना भी नहीं. सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को नहीं मांग सकता है जब तक आप कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. जैसे हम और आप दोनों एक जेई एग्जाम लिखा है, आपको अपॉइंटमेंट हो गया तो हम जाके मांग सकते हैं कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और देखेगा, क्योंकि फ्रॉड भी हो सकता है. लेकिन ये जाके ना आपका मांग सकेगा ना मेरा, बिकॉज ही डजंट कॉम्पीट विद अस. कोई इंटरेस्ट पार्टी नहीं. डजंट हैव द लोकस स्टैंडर्ड टू आस्क. ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है कंट्री में. पब्लिक लार्जर इंटरेस्ट में नहीं, वो पब्लिक लार्जर इंटरेस्ट में तो इसमें तो हम
public interest, so it has to be decided by me. I don't see any public interest here in your form है. Whereas आपको जितना भी है नंबर वन का अभी हम पढ़ा रहे हैं, नंबर वन का आप नहीं मिला है बोला है ये एनक्लोज किया हुआ है, उसको दिया हुआ है, एंड आप रिसीव भी किया है, और नंबर टू का एनक्लोज कर दिया है. PIO, नंबर 3, 4 भी आपको दिया हुआ है, 3, 4. Number 5 में 12 posts of district coordinators advertised, rest of the posts appointed on regulation of service through DDC. Number 5 को इतना तो जवाब दिया है. जब एक PIO ऐसा लिख के आपको देता है, this is a legal document now, plus all the pages he has आपको नाम से लिख के साइन करके दिया हुआ, सील भी है. 6 का भी तो आपको दिया है, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट. 1, 2, 4 में आपको वो नहीं किया बोल के क्लियरली बताया, नॉट एप्लीकेबल. मीन्स नॉट एप्लीकेबल मीन्स देयर इज नथिंग एज सच, ऐसा कोई उसका PIO के पास भी रिकॉर्ड नहीं है. सब इनको सब तो आपको दिया हुआ है क्या? सर हम सबको नहीं दिया, ये नंबर 4 जो एडवर्टाइजमेंट ये वाला आपको नहीं. नंबर 4 का वो नॉस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इसमें सर जो 25 नॉस ऑफ असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर जो विदाउट एडवर्टाइजमेंट और अपॉइंट किया, ये रिकॉर्ड है, वो हमको देना है. और ये जो सीधी मैंने बताया सर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर. हाँ तो फिर हमारा 25 में से 12 को एडवर्टाइजमेंट हुआ है, तो रिटर्न एग्जाम. बाकी लिखा हुआ है, रेस्ट जो है इन सर्विस वाला है. लिखा हुआ है क्लियरली. अब इसको नहीं पढ़ा होगा. He has लिखा है कि 12 posts of district coordinators advertised, rest of the posts appointed on regularization of service through DDC. लिखा हुआ है आपको. नहीं डीपीसी नहीं सर, ऑपरेशन नहीं करता, ये लोग झूठ बोल रहा है. नहीं वो झूठ भी बोलता हो नहीं भी बोलता हो, that is not my lookout. The court, the State Information Commission courts cannot look out on corruption matters. Our sole duty is that the information has to be given to you if it is false information or if it is correct information also, but it has to be signed, sealed by the PIO. The PIO ऐसा देता है तो modern list तो we cannot do anything. ये अगर वो नहीं देता है, then we will initiate action against it. जब आपको दे रहा है तो ये गलत भी, आप अभी जैसे बोला है ना, प्रेस से हुआ बोल रहा है, तो प्रेस से हुआ नहीं हुआ, दैट इज नॉट आवर लुकआउट. हम लोग कभी इसको नहीं पूछ सकते कि अरे प्रेस से हुआ बोलता है, आप क्यों ऐसे झूठ बोल रहा है. कैन नॉट से दैट. वी नॉट गिवन एनी अथॉरिटी टू इंक्वायर ऑन दैट. हम लोग का सिर्फ अथॉरिटी होगा कुछ पेपर PIO हाइडिंग कर रहा है तो we will initiate an inquiry. That much is our powers. उससे बाहर नहीं. तो आपका अभी एक सब सब so far no recruitment through. और फिर 8 का 7 का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ये भी एक दिन है, तो ये पोस्ट है. कॉपी ऑफ बायलॉज ऑफ एनक्लोज. 7 को भी आपको माइनस AGM मीटिंग एनक्लोज. In case of direct appointment deputation, no such recruitment. Furnish copy appointment permission will be enclosed here. But details of present director appointment by government, not on deputation. Appointment डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ही होगा. हाँ, ऐसा आप लिखना चाहिए था. अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बेसिस, नॉट ऑन डेपुटेशन. वो भी लिखा हुआ है, फिर ठीक है. फर्नेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आप ब्लैंक रख दिया, ठीक ही है, यू वोंट गेट इट. पेरोल exempted under section 8J. Payroll list of all employees. Payroll means the names को ये मांग रहा है, only the names, not कि आप कितना कौन किसको कितना जा रहा है. नहीं वो जरूरी भी नहीं और शो करना भी नहीं है. सिर्फ जैसे कि the director's name, deputy director's name, assistant director's name,
LDC ka, peon ka, driver ka. These are the staff that are being paid from our department. Name and designation. पेरोल रिसीव तो देना पड़ेगा ना, तो रिसीव है ना। नहीं आपको कैसे रिसीव? सिंगल पर्सन को नहीं बना, आप I'm asking for you the whole list of staffs. Whole list of staffs जिनका पे बनता है उस डिपार्टमेंट से with designation. सर आप जब गवर्नमेंट आपको पेमेंट दे रहा है, हाँ. इट कैनॉट बी अंडर नहीं पर जो आपको पब्लिक अथॉरिटी जब पेमेंट दे रहा है तो नहीं ऐसा नहीं होगा ना। पे को आपको रिवील नहीं कर पाएगा कितना पेमेंट सर मिल रहा है, हम मिल रहे सिंगल पर्सन, वही तो सबका किसी का भी तो नहीं दे पाएगा ना। जो पेरोल लिस्ट है वो हम हाउ कैन यू बी गेटिंग दैट नॉलेज या that information? Those information, if you get those information, I'm not telling about you. Maybe if someone gets that information, this person is drawing this much of salary per month. So if he has that information, correct information, it might even jeopardize that person's life. That person can be kidnapped by some antisocial elements for money, extortion. इसलिए उसको आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ डायरेक्टर से लास्ट स्टाफ तक का नाम, डिजिग्नेशन, पेरोल जिसको, जो आदमी इस डिपार्टमेंट से पे मिल रहा है उसको आप दे दीजिएगा, बट नॉट द अमाउंट। पैसा कैसे आपको डाइवर्स करेगा वो तो नहीं होगा। Only details file nothing enclosed. Seniority list be enclosed. Abhi, you only provide the name of the staffs, those who are under the payroll of your department with their designation. Only this much of information you have to give to the appellant before the next date of law. अभी लिखो इसमें both parties present and ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर जो डाटा है इसका पूरा डिटेल्स है। ये जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट और प्रिंट कॉपी ये इसका है, क्योंकि इसका एक भी दिया है नंबर 5 में नंबर 4 एक्टिविटी 9 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर। कौन सा आपका वो कौन सा नंबर है आपका एनेक्सर 1 में? एनेक्सर 1 4 में नंबर 4 एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर डेटा एंट्री ऑपरेटर असिस्टेंट। एक्टिविटीज कैरिड आउट तो दिया होगा, क्या एक्टिविटी होगा उसका ड्यूटी होगा। सर हमारा वही साइंस अंडरस्टैंड चिल्ड्रन से सर ये सॉरी ये नंबर 2 में नंबर 2 में नोट शीट ऑन व्हिच फाइल वाज मूव्ड एंड गॉट अप्रूव्ड। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर नाम डाटा एंट्री present notification order और इसका आधा रोल ये आपका ये नंबर 5 में होगा। नेक्स्ट है नंबर 5 में नंबर 5 में इसका जो नहीं सबको आपको दिया है तो ऑर्डर को जितना भी है कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट ये सब हमको बामंग सबको दिया हुआ है ना, सब है, सब अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दिया है। नहीं आप नहीं दिया बोलने से आप कैसे साइन है आपका साइन है ना ये? नहीं सर नहीं दिया है। क्यों? अरे आपका ये सिग्नेचर नहीं है क्या? ये रिसीप्ट है 2024 आई थिंक, ये आपका रिसीप्ट नहीं है क्या? ये तो सिग्नेचर साइन मैंने रिसीव किया था ना, लेकिन इसमें ये है कि वो डॉक्यूमेंट दिया है वो तो नहीं है ना। No. Stated that the PIO has furnished some of the information which we received on 9/7/2024. That information furnished
Right there. Yeah. PIO stated that all the information is applied by the have been furnished to the applicant on 5/7/2024, which the applicant received in person on 9/7/2024. After hearing both the parties, the commission observed number one, where Form A Annexure number 1, Annexure 1 of the bill, serial number 13 has not yet been furnished to the applicant. It is the information sought for furnishing the payroll list of all employees under the office of the Joint Director, PIO cum Joint Director, Science and Technology, Government of Arunachal Pradesh. This particular information pertaining to the name and designation, of employees receiving their salary from the office of the PIO is not yet furnished to the applicant, which has to be furnished by the PIO. Under the above observation, सर ये 14 नंबर का भी उसका पनिशमेंट है ये hereby order number 1 that PIO to furnish the payroll list of all employees under this department without mentioning the salary amount. So particular, without mentioning the salary amount, you have to furnish the information from your chair till the last person, on or before the next date of hearing, without pay. तो आपको हम रिपोर्ट आप पेरोल Second, नहीं दे सके स्लिप नहीं दे सके आप आपको सर्टिफाइड अंडरटेकिंग नहीं वो जरूरी नहीं है। इसका अब एक वकील है शायद, अब वकील है, एक वकील है आप शायद ना। सर पेरोल जो नहीं सी सेक्शन में सेक्शन नहीं क्लोज 1 में कैसे वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, but my wisdom says I cannot divulge it to you. I cannot order from my chair कि इसका पे कितना वो मिल रहा है इनको रेट, I cannot do that. सर हाई कोर्ट पीआईओ का नहीं PIO का काम नहीं है। When it has come to my court, he has to act as per my orders only. Now he cannot be acting independent. मेरा orders आपका अपील है,
इनका अपील नहीं है। आपका अपील को हम सुन रहे, आई एम हियरिंग योर अपील एंड व्हाट एवर जजमेंट और व्हाट एवर ऑर्डर आई pass out, he has to abide by that. And then now, when a PIO certifies, gives you a covering letter, signs those papers, it is an affidavit itself in it. एफिडेविट का मीनिंग को कीजिएगा, ये फरी है पहले। ये गलत फेमी में है हर एक अरुणाचल का जो भी यहाँ में आता है आरटीआई डालने के लिए। आप सर्टिफाई करके एफिडेविट करके मजाक जैसा है। हम लोग 20 साल कोर्ट में करा के जूता घिस घिस के एफिडेविट का मीनिंग और एफिडेविट का मतलब क्या है जानता है, इसलिए समझाता है। वंस एन ऑफिसर साइंस दैट इटसेल्फ इज एन एफिडेविट, कोर्ट मान लेगा। एफिडेविट का मीनिंग क्या है? द कोर्ट डज नॉट नीड टू प्रूव इट फर्दर कि ये पीआईओ ने, ये ऑफिसर ने दिया है। दैट इज द ओनली मतलब ऑफ एफिडेविट। एक सादा पेपर में भी अभी पीआईओ साइन किया, सील किया, हो गया, दैट इज ऑफिशियल। उसको कोर्ट भी ना नहीं कर सकता है। जैसे आपका वाला केस में, मेरा वाला केस में, हम लोग वकील लोग हैं, वी आर नॉट गवर्नमेंट। जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने से भी बात अलग है, आई डोंट नीड एनी एफिडेविट, बट एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, इफ आई हैव टू सबमिट बिफोर a court, I have to swear by an affidavit so that the court doesn't need to further prove it. लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर में तो एक तो साइन सील कर दिया तो उसको क्या प्रूव करेगा? कोर्ट टेक्स इट एज ए लीगल डॉक्यूमेंट। हाँ, without fear, the PIO will be present in the next date of hearing without fail. Failing with necessary action will be initiated against him as per the provisions of RTI Act 2005. Next, the appellant to be present in the next date of hearing without fail. Failing which his appeal will be heard and determined ex parte. Next, notice need not be served to both the parties for the next date of hearing as both the parties are present in the court. Fix the next date of hearing on 23rd, 28th April 2:30 p.m. सर 28 अप्रैल 2:30 p.m. का पहले आप इनको जो पेरोल है इनको दे दीजिएगा। सर ये ओनली पेरोल को बोल रहा है, हाँ, पेरोल को कोई बोल रहे दूसरा हैं। को नहीं होगा। नहीं, ये आपको दूसरा सब मिल गया ना, आप शायद रिसीव भी सर किया है। नहीं किया है। इसको भी हम एक्चुअली आप मिल गया बोल भी सकता है। ये साइन इट, वी डिड। साइन रिसीव बोल लिया, आप ऐसे नहीं बोला कि वो अंडरटेकिंग हो, किया हम। जो भी हो आपको इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है ना। सर बीइंग आप कोशिश जज, सिर्फ हम दोनों का बीच में आर्गुमेंट जज करना था। आप डायरेक्शन दे रहे हैं, आप डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं। हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको मेरे ऊपर पे रखिए ना। जज यू आर कोशिश जज। हाँ, आई नो इट। Then दिस इज माय फॉल्ट। हम दोनों का आर्गू से पहले आप उसको डायरेक्शन दे। हम